Hello children, how are you all? I hope you all are fit and fine, watching the videos and completing your work. So children, watch the videos regularly and complete your work from the videos. Children, this is your computer book, IT Planet, My Bits and Bytes, computer series 2. Children, in the previous video, we were doing chapter 8, that is storage device. So let us start. Storage device, chapter 8. So children, till now we have understood that storage means, firstly we'll discuss storage. So we have already studied. Let us revise what we did in our previous video. So children, till now we have understood what is storage. Storage means keeping something safely for the future use. So children, I had given some examples also. With the help of example, I hope you all have understood what is storage. So keeping something safely for the future use is called storage. Children, for keeping something safely, we need some devices. For example, children, if you want to store something, you need some vessels. In the kitchen also, when you store something, you need some vessels. Similarly, here for storing the data, you need some device. Similarly, children, for keeping the for storing the data, we need certain devices, and these devices are called storage device. So in the previous video we had studied about different types of storage devices, and today we are going to read about these in detail. So storage device, children, you can see here a computer, a computer can store your work in different storage devices. Some of the storage devices are hard disk, compact disk, pen drive. Let us have a look at these storage devices one by one. So firstly children, hard disk. What is this hard disk? Hard disk is a main storage device. And why it is known as main storage device? Because it is fixed inside the CPU. That means it is a part of a computer. We don't need to attach something from outside. In this case, it is already there in the CPU. तो ये पहले से CPU के अंदर होता है. हमें सिर्फ जो भी हम काम करते हैं कंप्यूटर में उसे सेव करना होता है, और जब हम सेव करते हैं तो ऑटोमेटिकली जा करके हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है. तो इट इज़ जस्ट लाइक अ सेफ इन द एलमिरा. जैसे हमारे एलमिरा में सेफ होता है जिसमें हम अपने वैल्यूएबल्स रखते हैं और उसे वहाँ पे प्रिजर्व करके, या हम उसे वहाँ पे स्टोर करके रखते हैं या फिर वो सेफली रखते हैं, वैसे ही यहाँ पे ये जो ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव कहते हैं, और इसमें डेटा अपने आप जा करके स्टोर हो जाता है. तो हार्ड डिस्क इज़ यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन. तो हम कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में ढेर सारा डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज hard drive. So what is hard drive? Hard drive is a part of computer which is fixed inside the CPU, and it is used to store the data or information from in the computer. So children, what is data and information? You can see here, data is a type of input, means something which we give to the computer is called data. As you know, when we work on a computer, we need to give some instructions to the computer. On the basis of those instructions, computer performs work or do the processing. So this data is the input which we provide to the computer in the form of words, letters, numbers, or some other instructions. So these are the instructions which are known as data, and these data are processed by the computer and we get the information. तो यहाँ पे डेटा इनपुट करते हैं और आउटपुट पे हमें इंफॉर्मेशन मिलता है. सो दीज आर द टू टर्म्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी यू ऑल शुड नो वेरी वेल. डेटा का मतलब होता है सामान देना. जैसे हम घर में अपने घर के किचन में दाल चावल बनाते हैं तो पहले हमें कच्चा चावल चाहिए होता है, कच्ची दाल चाहिए होती है, तो उसे हम डेटा कह सकते हैं. और उस डेटा को यूज़ करके हम
खाना पकाते हैं, तो खाना जो पक जाता है दैट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो ये डिफरेंस है दोनों में, डेटा हम देते हैं कंप्यूटर को और इंफॉर्मेशन हमें उसके बदले में मिलता है, और इसी डेटा और इंफॉर्मेशन को वी नीड टू स्टोर इन द कंप्यूटर, एंड फॉर स्टोरिंग दीज डेटा और इंफॉर्मेशन वी नीड different types of devices, and these devices are called storage device. अब इन devices को हम storage device कहते हैं. Now here is another type of storage device, for example CD-ROM. CD-ROM एक तरह का storage device है. CD-ROM is a circular shape. Children, I have already told you about two different types of storage device. One is CD-ROM and DVD. CD और DVD में कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों लुक वाइज एक जैसे होते हैं, दिखने में एक जैसे होते हैं, शेप इज़ ऑल्सो सिमिलर एंड द यूसेज इज़ ऑल्सो सिमिलर. दोनों का यूसेज यानी काम भी एक होता है, शेप भी एक जैसा होता है, कलर भी एक जैसा होता है, दिखने में भी एक जैसे होते हैं, लेकिन द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ देयर स्टोरेज कैपेसिटी. मीन्स CD-ROM में हम बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर नहीं कर सकते, बट DVD में हम जितने चाहे मतलब काफ़ी कंपैरेटिवली बहुत सारे डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं. तो यहाँ देखो CD की तरह DVD दिखता है, ये DVD है, ये भी CD की तरह दिखता है, और यहाँ पे CD ऑल्सो लुक लाइक अ DVD, बट द डिफरेंस इज CD में हम कम स्टोरेज करते हैं, CD छोटी ग्लास की तरह है, और DVD बड़ी ग्लास की तरह है. छोटी ग्लास में कम दूध या पानी आएगा, लेकिन बड़ी ग्लास में उससे ज़्यादा आएगा. बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब दोनों के बीच का अंतर है छोटा और बड़ा होने का. जो छोटा है उसमें कम आएगा और जो बड़ा है उसमें ज़्यादा आएगा. तो लेट अस नो अबाउट इट. CD. CD-ROM is a circular shaped disk, even DVD is circular shaped disk, and both are used for storage. इसमें भी डेटा को स्टोर करते हैं, उसमें भी डेटा को स्टोर करते हैं. और फुल फॉर्म ऑफ CD इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. हम इसमें स्टोर करते हैं, सेव करते हैं और फिर उसको रीड करते हैं. और जो CD होती है, इट कैन बी पोर्टेबल, it can be carried from one place to another. It is a portable device or it is a portable disk which can be carried from one place to another. एक जगह से दूसरे जगह को हम मूव कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं. एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और सेव भी होता है, ईजिली हम कैरी कर सकते हैं, स्मॉल साइज़ में होता है और हम इसको कहीं पे भी रख करके कैरी कर सकते हैं. सो इट इज़ वन ऑफ द पोर्टेबल डिस्क. सिमिलरली इन केस ऑफ DVD ऑल्सो सेम थिंग, हम इसको भी कैरी कर सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो वेरी स्मॉल एंड लाइट इन वेट, और आराम से इसको अपने बैग के पॉकेट में रख करके वी कैन कैरी इट. द ओनली डिफरेंस एज आई टोल्ड यू इज़ द कैपेसिटी. सो DVD का मतलब होता है स्टैंड्स फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क. इट इज़ सिमिलर इन शेप टू दैट ऑफ CD के तरह ही होता है, एंड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एज कम्पेयर टू द CD. लेकिन DVD जो होता है बड़ी ग्लास है, CD जैसे बताया छोटी ग्लास है, तो जो DVD की कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द CD. बस यही एक डिफरेंस दोनों में होता है. दोनों एक जैसे होते हैं देखने में भी, काम में भी, बस दोनों की स्टोरेज कैपेसिटी डिफर करती है. नाउ CD-ROM. व्हाट इज़ द CD-ROM? CD-ROM और DVD ड्राइव, the storage and the read data to store and read data from a CD-ROM or DVD. The CD-ROM DVD is inserted into a drive attached to the CPU. This drive is known as CD-ROM or DVD-ROM. So children, CD और DVD-ROM drive का मतलब होता है it is a place from where we can run the CD और DVD. ये इस तरह का होता है, and it is also attached in the फिक्स्ड इन द CPU. ये आपका CPU है, दिस इज CPU, जिसे हम CPU बॉक्स कहते हैं. ये हमारा CPU है. इसके अंदर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों फॉर्म में होता है, सीधा भी और इस तरह से भी DVD ड्राइव हो सकता है. इसमें हम CD, ये कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन पूरा पार्ट इसका अंदर होता है, पीछे का पार्ट अंदर होता है, सिर्फ हमें ये सामने वाला पार्ट दिखाई देता है. हमारे पार्ट, ये वाला पार्ट सिर्फ हमको दिखाई देता है. दीज टू आर सेम. और दिस इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर हम यहाँ बटन प्रेस करते हैं, उसके बाद एक हमको ये डिस्क खुलता है, इसके अंदर वी कैन प्लेस द CD और DVD, एंड इंसर्ट करने के बाद इट विल रन द CD और DVD, एंड वी कैन रीड द इंफॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. सो दिस एरिया इज़ कॉल्ड CD और DVD रोम, और DVD ड्राइव जिस पे हम CD या DVD को लगा के रीड करते हैं. तो यहाँ पे चिल्ड्रन
CD रोम, DVD ड्राइव आपका वो प्लेस है जहाँ पे हम कंप्यूटर में CD को लगा करके उसकी इंफॉर्मेशन को रीड और राइट करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड CD or DVD drive. Now third one is pen drive, children. Now pen drive is another storage device which is very commonly used or popularly used. Popularly used का मतलब है large number of people use it, means most of the people use pen drive because it is very easy to carry, it is very easy to use also, and it is the safest way of storing data. Now device, properly used device to store your work. It is a small and portable device with the help of which you can transfer data safely from one computer to another, and it is also known as flash drive. हम इसको फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं. तो यहाँ पे जो पेन ड्राइव होता है वो अलग अलग साइज और शेप में पाया जाता है, एंड इट इज़ फाउंड इन वेरिंग शेप्स. छोटे से छोटा, यू कैन सी दिस वन इज़ वेरी स्मॉल, छोटे से छोटा और थोड़ा इससे बड़ा भी होता है. तो हमारे पास अलग अलग तरह के पेन ड्राइव होते हैं. और CD और DVD में तो स्क्रैचेस लगने के डर होते हैं, का खतरा रहता है या डर रहता है. वंस यू गेट स्क्रैचेस ऑन द CD और DVD, इट वोंट प्ले, हम उसे प्ले नहीं कर पाते, और एक दो बार यूज़ करने के बाद वो ख़राब हो जाते हैं, ईजिली ओपन नहीं हो पाते. लेकिन इन पेन ड्राइव चिल्ड्रन हम उसे रफली बहुत समय तक यूज़ कर सकते हैं, और स्क्रैचेस लगने के भी डर नहीं होते, और इजीली रीडेबल होते हैं और राइटेबल भी होते हैं. सो पेन ड्राइव इज़ बेटर देन CD एंड DVD ऑल्सो. तो यहाँ पे नाउअडेज mostly we are not using CD or DVD. Most often we are using pen drive only. That is why we call it as commonly used or popularly used storage device. So children, these were the different types of storage devices which we use nowadays, and we have I hope you all have understood. So you or your parents may be using one of these, so you may be very much familiar with all these storage devices. So go through the chapter and try to understand these now. So with this we have completed the chapter, and I hope you all have understood also. Go through the chapter and try to understand the concept. Children, try to understand the word meanings also and learn the spellings. And if still you have any doubt, we will discuss the same in online classes. So children, let us see our next topic, self-evaluation. Children, as we know, here are some points which we have already studied in the chapter, and I hope you all have understood. I know that data can be stored onto a computer through different storage devices. So children, we were studying the same in the chapter, that we use different storage devices or different devices to store the data. So to store the data or to store the work which we do on the computer, we need different storage devices. जैसे किचन में हम बहुत सारा सामान रखते हैं और सारे सामान को स्टोर करने के लिए हमको बॉक्सेस की ज़रूरत होती है, इसी तरह यहाँ पे भी हमें कोई भी चीज़ स्टोर करना होता है तो वी नीड सम डिवाइसेस, एंड दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड storage devices. As we use these devices to store the data, it is known as storage devices. So you will put a tick here. We agree with the statement, and you will put a tick in front of the statement. Agree. I know that hard disk is one of the main storage device used to store data. So children, hard disk is the main storage device, or we can say primary storage device, because whatever work we do on the computer, for the first time it get stored in the hard disk. हमें किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती है, सबसे पहला जो स्टोरेज होता है वो हार्ड डिस्क में होता है. फिर हार्ड डिस्क से हम किसी और डिवाइस में पेन ड्राइव, CD, DVD में कॉपी करके रख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी CD और DVD में कॉपी कर सकते हैं. अगर हमको लगता है वी डोंट नीड टू सेव इन हार्ड डिस्क, तो हम सेव नहीं करेंगे कंप्यूटर में, हम डायरेक्टली CD या DVD में भी कॉपी कर सकते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. नाउ थर्ड वन, I have learnt that CD-ROM and DVD both are circular in shape. We all know that there is common between the CD and DVD. They all look alike. They are similar in shape. So only difference is that storage capacity is different. तो दोनों एक जैसे होते हैं, काम भी एक ही होता है,
और देखने में भी एक जैसे होते हैं, कलर भी एक होता है, सिर्फ उनमें डिफरेंस होता है, तो वो है उनका स्टोरेज कैपेसिटी। सीडी में कम हम स्टोर कर सकते हैं और डीवीडी में बहुत सारा स्टोर कर सकते हैं. सो वी एग्री विद दिस वन ऑल्सो. I know that pen drive is one of the smallest and a popular storage device nowadays. So pen drive is used by most number of people. It is commonly used. That is why we can say pen drive is a popular storage device nowadays. So we all have studied these points in the chapter. We agree with these points. With this, children, we have come to the end of this video. We will meet once again in our next video. Go through the chapter, learn the concept, and if still you have any doubt, you can clear in the online classes. So thank you and have a nice day ahead.